Hi, good evening, everyone. Good evening, everyone. Welcome to this live session. This session is being conducted by Upstox Pro, and my name is Amit Goel. I'm a CMT and a SEBI registered RA. And today we are going to be discussing about anchored VWAP. It's a very interesting topic, and this topic is on account of your request. हम लोगों ने इन द मंथ ऑफ दिसंबर एक इंट्राडे सीरीज किया था जो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत वेल रिसीव्ड हुआ एंड वहां पर मैंने वीवैप के बारे में बात की थी। बेसिस दैट अब हम लोगों को एक रिक्वेस्ट आई, कई सारे रिक्वेस्ट आए कि सर एंकर्ड वीवैप के बारे में भी थोड़ा बताएं ताकि उसके उस टॉपिक को भी हम समझें एंड उसको भी हम अपने ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकें। So we are going to have a very short session of about 30-35 minutes. And the topic that we will be discussing today is anchored VWAP. So without further ado, let me start the presentation. And I'm sure by now you must be aware that we have started a series of live market analysis which happens every day when the markets are open in the morning at about 8:30 or 8:45 for about 45 minutes to 1 hour, in which I come around and we discuss about the global markets, the Indian market setups, how to use price action, how to analyze price action as a technical analyst, and also make sense of derivatives data, which is ever changing. So we have started this new session every day, which comes on in which we do it every day as a live market analysis. Again, you're all invited to please be a part of it and take maximum benefit out of it. Now, let us now straight away deep dive into the session. So we are trying to understand what this concept of anchored VWAP is. So I've prepared a few slides for your interest, and I will quickly go through them. So anchored VWAP is essentially you are pinpointing the VWAP price as per your understanding that, okay, from here I want to track the price. Say it could be 1st of January, for example. It could be, right after the earnings, what kind of price movement a particular underlying has given. So you want to track what has been the institutional footprint on that stock from a particular event till now. Okay. Generally, in a normal VWAP, what happens is हम डे स्टार्टिंग पे चालू करते हैं VWAP या 5 दिन पहले या 7 दिन पहले या प्रीवियस डे पहले चालू करते हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई इंट्राडे में VWAP का क्या कोलेशन है, मतलब क्या काइंड ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, किस प्राइस पे किस वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हो रहा है, एंड वी गेट द VWAP. बट दैट इज वेरी वेरी स्टैटिक इन नेचर. वो उस पर्टिकुलर दिन के लिए काम आता है. So it is very good normal VWAP if you are a intraday trader, right? But अगर आप intraday and swing trade भी करते हो and आपको ये चाहिए कि भाई a particular बाकी आपने सारे technical analysis कर लिए, but then along with that you also want to understand कि what is the institutional footprint, where is the maximum weightage that an institution is paying attention to. ठीक है, तो अगर आप swing trading करते हैं तो VWAP can also, an anchored VWAP can also help you do that. Okay, and in a few days time बजट आने वाला है, तो आप आज ये सेशंस में सीखेंगे कि किस तरह से एंकर्ड VWAP यूज करते हैं, उनका क्या महत्व है, एंड बजट आने के बाद आप उसको यूज करने की कोशिश करें एंड इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप उसको यूज करके देखें कि एंकर्ड VWAP किस तरह से डेवलप हो रहा है ताकि आपको रियल टाइम में उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए. Now let us go through some of the slides. Now why institutions rely on VWAP for execution? Institutional mandate ये होता है कि भाई जो विजिबल ऑर्डर्स होते हैं ना, जो हम लोग 20 डेप्थ देखते हैं या 40 डेप्थ देखते हैं, it is essentially a very small portion of the overall order book for a underlying. ठीक है, काफी सारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर बुक जो है
वो मास्क्ड होता है, वो दिखता नहीं है हम सबको. इट इज नॉट विजिबल ऑन द on the bid ask table. Okay, a lot of all those orders is not even punched into the system. अगर ऑर्डर सिस्टम में पंच होगा तो कहीं ना कहीं तो उसका फुटप्रिंट होगा, बट वो ऑर्डर ही पंच नहीं होता. कई सारे सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स यूज होते हैं जिसके बेसिस पे जब भी करंट मार्केट प्राइस वीवैप प्राइस के आसपास आता है विद इन अ बैंड, आपके वो ऑर्डर्स फिर धीरे धीरे फ्लो होने लगते हैं, ताकि लार्ज ऑर्डर्स का जो प्रेशर है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो प्राइस पे ना पड़े. विजुअली अगर आपको सिंपल तरीके से इसको समझना है, नॉर्मल स्टैंडर्ड वीवैप इस तरह का कुछ दिखेगा कि आप दिन के स्टार्टिंग में वीवैप लगाए और उसके बेसिस पे प्राइस को ट्रैक किए. एक्सेलेंट टूल इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर ओनली. बट इफ यू वांट अ बिगर पिक्चर एंड अ होलसम पिक्चर कि भाई फ्रॉम अ स्पेसिफिक इवेंट, वो अर्निंग्स हो सकता है. ओके, वी विल डिस्कस व्हाट सॉर्ट ऑफ इवेंट्स वी आर लुकिंग एट. अर्निंग्स हो सकता है, आरबीआई पॉलिसी हो सकता है फॉर बैंक्स, बजट हो सकता है फॉर बजट सेंसिटिव सेक्टर्स, या प्रोबेबली द इंडाइसेस. आप उसको एंकर्ड वीवैप के थ्रू देख सकते हो. What are the main events that one can think of? Union budget, which is what we discussed and is going to be published on the 1st of February. And then we have the RBI policy, quarterly earnings. It could also be the expiry week. If you are an options trader, you can also use anchored VWAP to understand what is the average price at which the institutions are either buyers or sellers in a particular underlying expiry to expiry. Okay, now how do you identify high probability anchor points? What are the high probability anchor points that you would discuss? You would look at 52-week high कि वहां से प्राइस नीचे कितना चल रहा है. ठीक है, what is the kind of trend, what is the kind of slope the anchored VWAP is showing to us. Okay, it could be earnings gap, it could be in anything negative also in the in news flow. Say for example, it is a pharma stock and there is some sort of a observation by US FDA, right, a negative observation on one of their factories. तो उसके कारण प्राइस काफी शार्पली नीचे जा सकता है. फ्रॉम दैट पॉइंट इन टाइम आपको ट्रैक करना है क्या प्राइस अभी भी नीचे की तरफ ही स्लोप कर रहा है, या देयर इज सम इंस्टीट्यूशनल बाइंग हैपनिंग व्हेनेवर प्राइस क्रॉसेस एंकर्ड वीवैप प्राइस. ठीक है ना, तो जो प्राइस डिप हुआ वहां पर आपने एंकर कर दिया, वहां पर आपने पिन कर दिया और वहां से आप ट्रैक करने लगेंगे volume weighted average price, right? It could be few hours, it could be few days, it could even be few weeks. So you will be confident. आपको ये मालूम पड़ेगा कि as soon as the prices start trading above the anchored VWAP and you have anchored it against that negative news, आपको तब मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर institutional buying, मतलब यहाँ पर जो बाइंग आ रही है ना, ये वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है. सो देयर इज अ लिटिल मोर स्टेबिलिटी. इफ इट स्टार्ट्स ट्रेंडिंग अबव इट, that is the time you would look to go long. Now, let me first, before setting up a strategy or anything, because this is a very short engagement of, few minutes, of about half an hour to 40 minutes, what I will do is I will quickly show you how you can use Anchor VWAP on our platform. So let me take you to the platform. All right, friends. Now, I hope everybody is able to see the trading view integrated platform of Upstox. Everybody is able to see the platform? All right, great. Now, first and foremost, what I will do is, let me just start Nifty, and this is the daily chart. And we have to implement or input the anchored VWAP. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, FX/indicators में जाएंगे और वहां पर you will see anchored VWAP with bands. All right, so you will have to choose this. Okay, why nothing is coming? Why nothing is coming? Why you are not able to see the anchored VWAP?
The reason is this is the spot chart. There is no volume visible on the spot chart. And anchored VWAP का मतलब ही है, नाम में है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये गलती आप मत करिएगा। आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे जाना है। ठीक है, यू विल गो टू फ्यूचर्स चार्ट, यू विल क्लिक निफ्टी फ्यूचर्स करंट कंटिन्यूअस। As soon as you do Nifty futures, you will now be eligible to put the anchored VWAP. अभी भी दिख नहीं रहा है। अभी क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पिन नहीं किया है, हम लोगों ने टाइम या डेट नहीं दिया है। ओके, तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस पुट वन एंकर एंड लेट्स से ये जो मार्केट का टॉप था ना, व्हाट इज द मार्केट टॉप? 26,510 ऑन द फ्यूचर्स। 26,500 के टॉप से अभी तक का वॉल्यूम वेटेड, मतलब विथ वॉल्यूम एवरेज प्राइस क्या रहा है। ठीक है, मतलब जहां जो एक, ये तो नॉर्मल प्राइस एक्शन है, वो एक ऑर्डर पे भी हो सकता है, एक लॉट पे भी हो सकता है। ठीक है, बट जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस लाइन। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा दिन है? ये दिन है 5th ऑफ जैन। तो लेट मी जस्ट गो टू द इंट्राडे चार्ट। 5th ऑफ जैन के लिए 5th of Jan 9:15. ठीक है, so what we will do is we'll go to anchored VWAP and let me remove or let me keep everything as is ताकि आप confusion ना करें। 5th of Jan 9:15. ओके, अब देख रहे हैं आपने 5th of Jan 9:15 से anchored VWAP चालू कर दिया। ओके, and it is going to be visible across time frame. Let us just stick to a particular time frame, which is let's say a 15-minute or a 75-minute time frame भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, नाउ इसमें तो बहुत सारे लाइंस है, बाय डिफॉल्ट जो है काफी सारे लाइंस आएंगे एंड यू विल फील कि यार ये इसको कैसे यूज करें, व्हाई शुड आई यूज दिस। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज हम एंकर्ड वीवैप में वापस जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे। सो यू आर सेलेक्टिंग द एंकर, द पिन, आप जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने यहां से स्टार्ट किया ताकि हमको मालूम पड़े कि सुबह 9:15 को किस तरह का प्राइस एक्शन था, दैट इज द टॉप ऑफ द मार्केट। करेक्ट, तो वहां से हमको ये दिखना है वीवैप का प्राइस है, इसको हम चलो ब्लू कर देते हैं, फुल बॉडीड, एंड देन फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन को एक बार, या सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन को रख लेते हैं एंड थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन को हटा देते हैं। तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक का हम एंकर्ड वीवैप प्लस बैंड्स देख रहे हैं। अभी क्लियर? हम लोगों ने अपर बैंड 2, लोअर बैंड 2 वीवैप ले लिया। तो ये जो आपका ब्लू लाइन है, इसको मैं थोड़ा और थिक कर देता हूं। नाउ कैन यू सी दिस ब्लू लाइन? So what we have done is we have anchored the volume weighted price not from yesterday's price, not from today morning's price, but from the all time high price. ठीक है, वहां से अगर हम देखें तो मार्केट वेरी क्लियरली हैज बीन ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, and every time there has been an attempt in the market, every time there was an attempt here, right, or over here, market has faced a sell off. Slope is down of anchored VWAP। ठीक है ना, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है VWAP के नीचे जा रहा है एंड वी आर ट्रेडिंग अराउंड -2 स्टैंडर्ड डिविएशन। करेक्ट, so we are walking the bands on the lower side. So whenever we are outside the bands over here, these are your oversold levels. You will look for technical
pull back or bounce. Correct? Every time you see this happening, whenever there is this sort of a टू स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे जब चलता है तब आप देखेंगे कि अधिकतम प्राइस जो है एक टेक्निकल बाउंस देने की कोशिश करता है। तो यहां पर आप मीन रिवर्जन ट्रेड्स कर सकते हो। क्लियर? राइट, सो दिस इज योर एंकर्ड VWAP from all-time high. These are your two standard deviations. So if you are an intraday or a swing trader and you want to use anchored VWAP from a particular event like an all-time high or say from budget जो भी ट्रेंड करता है, you will find that the market has been in this band. ठीक है, मार्केट ट्रेंड कर रहा है, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, whenever there is a price action which is outside the two standard deviation band, you know that there could be a technical bounce, जो आज देखने को मिला, कल देखने को मिला। कल हम लोगों ने कल के सुबह के लाइव मार्केट एनालिसिस में ये टेक्निकल बाउंस के बारे में चर्चा भी किया था। ठीक है, and now the market is within these two bands. So how can you use the two bands? How can you use the VWAP? Number one, if the bands touch here, this could be a retracement sell. Correct? Because the slope is negative. So whenever there is a retracement happening to the VWAP and you find that there is a price rejection, you do a retracement sell, keeping your SL right above the VWAP. ठीक है, and you are aiming for the target here. Simple है. This is one strategy. जहां यहां पर आता है outside the two standard deviation band and you see this kind of a hammer. Okay, and we have also seen that around these prices was the negative positive divergence on RSI. So जब ये एविडेंस दिखता है, you play for a mean bounce. यहां पर आएगा, so you are playing at the edges of the bands. Right now ये पूरा सेटअप नेगेटिव है जब तक मार्केट यहां तक नहीं आता। करेक्ट, यहां पर हम लोगों ने टेक्निकल बाउंस ले लिया है। Now an institution would want to buy only when the prices cross this level. Okay, they are interested to buy this area, maybe not in this area. So they will, if they are interested, you will find evidence कि वो जैसे ही VWAP को क्रॉस करता है and there is a buying interest, you will find a lot of volume also happening there. ठीक है, and you will find big candles getting formed there. तो आपको क्लियर साइंस ऑफ एविडेंस दिख जाएगा कि भाई इंस्टीट्यूशंस भी इस प्राइस पे इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए। Now, let me open the presentation a little more and then go ahead. सर आप हिंदी में टाइप करेंगे, हाँ ऑप्शन पे लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन प्रीमियम्स जो हैं वो एक नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उसकी प्राइसिंग जो होती है ना वो ग्रीक्स के कारण नॉन लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू होता है, उसमें वॉलेटिलिटी होता है। तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन कि भाई प्राइस ऊपर गया अंडरलाइन का तो ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा। नहीं, प्राइस ऊपर नहीं भी गया और अगर आपका आईवी बढ़ गया तो भी ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं। और प्राइस अगर ऊपर या नीचे नहीं भी गया ऑन अकाउंट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम आपका प्रीमियम घट सकता है। तो while it is also plottable on a chart, but because of this peculiar non-linearity, it is not recommended. फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप डाल के देखो, आपको जमता है तो आप करें, बट theoretically from a purist standpoint, linear indicators on a non-linear instrument अच्छे से जल नहीं होते। तो I would avoid doing that. ऑलराइट, चलिए तो अभी एंट्री क्या है, मैंने अभी आपको दो तीन एंट्रीज बताई थी कि भाई अगर स्लोप आपको क्लियर है, राइट, तो आप क्या करेंगे, स्लोप में आप देखेंगे कि भाई VWAP ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। लेट अस टेक अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर हम लोगों ने निफ्टी का देख लिया, लेट अस सी हम एक स्टॉक का देखते हैं।
ये एक स्टॉक है जिसका नाम है आईटीसी। मैंने इन सब का 5 मतलब जो एंकर हम लोगों ने कर रखा है, आईटीसी में हम देखते हैं कोई बड़ा एक प्राइस इवेंट। कैन यू ऑल सी आईटीसी में ये बड़ा प्राइस इवेंट था, ठीक है। तो दिस वाज ऑन द 1 ओके, इंटरेस्टिंग। 1 को यहाँ पर हम लोगों का एक प्राइस इवेंट था, यहाँ पर एक बड़ा प्राइस मूवमेंट आया। तो 1 330 क्लोजिंग पे हम इसको सेटल करते हैं। तो भाई ये जो एक बड़ा धक्का लगा, जो इंपोर्ट जो इसके सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, ड्यूटीज बढ़ा दिए गए थे, उसके कारण एक बड़ा स्लम्प आया फ्रॉम 400 रुपीज टू नियरली 325 रुपीज, 75 रुपीज का स्लम्प आया है। तो वहां जो फर्स्ट डे का स्लम्प आया ना, वो हम देखते हैं। इसको हम सिंपल करते हैं, सेकेंड डे का 9:15 कर देते हैं। तो सेकेंड डे दैट इज 2 का 9:15 से हम वीवैप कर लेते हैं फॉर आईटीसी। ऑलराइट, सो नाउ we can also see in ITC what is happening। बहुत क्लियर मालूम पड़ रहा है आईटीसी में क्या हो रहा है। आईटीसी इज ऑल्सो वॉकिंग द लोअर बैंड, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो फेसिंग रिजेक्शन हियर, करेक्ट। इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो एनी पुल बैक्स आर नॉट गेटिंग मूव्ड अप, ठीक है। इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक, बट रिजेक्शंस आर गेटिंग फेस्ड वेरी क्लियरली इन दीज इंस्टेंसेस व्हेन, जहां आपको ये मालूम पड़ता है कि भाई इसमें लेवल 2 पे ही आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लोअर लेवल का भी एक बैंड डाल के देख सकते हैं। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन 1, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के बैंड्स डालेंगे, आपको यहाँ पर आईटीसी में ट्रेड सेटअप क्लियर नजर आता है। क्या सेटअप है देखो, हाउ विल यू इंटरप्रेट दिस। स्लोप इज नेगेटिव, ओके, रिजेक्शंस एट 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वाला, करेक्ट। So what you will do is you will join shorting this stock every time it touches the standard deviation 1 band. Okay, this is one way of using it. Let us take a couple of more examples. ITC देख लिया. So there is nothing to do with derivatives or sorry, there is nothing to do with options trading here. यहाँ पर तो हम simple price action देख रहे हैं. Let us see a strong stock. कोई metal stock देख लेते हैं. Let's say नेशनल एल्यूमिनियम, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव देख लिया है, अब थोड़ा पॉजिटिव देखते हैं। इसका हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। लेट अस सी फ्रॉम वेयर देयर वाज अ वेरी शार्प प्राइस मूव, ओके। तो कैन वी से दैट देयर वाज अ नाइस ब्रेकआउट ऑफ दिस राउंडिंग बॉटम। कैन वी से रुशम, निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोगों ने इंट्राडे के बारे में आज सुबह 1 घंटा खूब सारी बात की, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह का एक पुल बैक आ सकता है, जो मार्केट ने दिखाया भी, ठीक है। तो आप हमारे साथ सुबह के सेशन में बने रहिएगा, जहां पे हम लाइव मार्केट एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स बैंक नेक्स के बारे में। ऑलराइट, तो अब जो हम देख रहे हैं, ये हम एक टॉपिक है एंकर्ड वीवैप, जिसके बारे में काफी डिमांड आई थी, उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बट आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। और यहाँ पे देखो जेन्युइन कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यूजर्स को एक एक छोटे छोटे टॉपिक, जैसे आज हम एंकर्ड वीवैप के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने ओआरबी के बारे में बात किया, ओपन हाई ओपन लो के बारे में बात किया, इंटरेस्टिंग सिंपल एक एक टॉपिक लेके उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि हम लोगों को वो टॉपिक के डेप्थ में जाने का मौका मिले। ना कि मैं यहाँ पर कोई जादू मंत्र लेके आया हूँ कि भाई आबरा का डाबरा बोले और हमारे पास कोई मैजिक इंडिकेटर है कि जिसका 99% का एक्यूरेसी रेशियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा बना ही नहीं है जिसमें 99% का एक्यूरेसी है, तो वो सब तो आप भूल ही जाओ। आप ये कॉन्सेप्ट इंडेक्स स्टॉक्स कमोडिटीज कोई भी अंडरलाइन पे कर सकते हैं जिसमें वॉल्यूम्स दिखें,
ठीक है, तो निफ्टी स्पॉट पे नहीं हो सकता क्योंकि आप लेट ज्वाइन किए हैं, मैं आपको ये वापस बता दे रहा हूँ। चलिए, हमारे पास और 10 मिनट है, हम कोशिश करके इसको देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि भाई चार्ट पे एक पैटर्न था, जो पैटर्न इन द अर्ली पार्ट ऑफ दिसंबर, राइट, यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया, राइट। तो ये प्राइस क्या है, 261-62 रुपीज पे ब्रेकआउट किया। अब हमको उस ब्रेकआउट से देखना है, वी आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर इवेंट, राइट। तो ये अच्छा खासा दिख रहा है कि भाई देयर वाज अ नाइस राउंडिंग बॉटम एंड देन देयर वाज अ क्लीन ब्रेकआउट। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि वो ब्रेकआउट का टेक्निकल सपोर्ट, उस ब्रेकआउट से अभी तक का सपोर्ट क्या हो सकता है फॉर एन इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ का कोई भी एक प्राइस पॉइंट उठा लो, एनीवेयर इन दिस एंटायर एरिया, ठीक है। We can use any of the price point here. So what I will do is I will say, let me pick up this price point which is 12th of December starting. ओपन हाई ओपन लो था यहाँ पर, है ना, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन दिस कैंडल ओपन is equal to low which is bullish, राइट। सो आई इन माय ओपिनियन यहाँ पर वो लाइन को काफी देर तक, काफी दिनों तक ऊपर नीचे किया एंड डिसाइसिवली जो मूव आया है वो 12 दिसंबर ऑनवर्ड्स आया है, जहां पर ओपन वाज इज इक्वल टू लो एंड द मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप इन नैल्को, ऑलराइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये जानना है फ्रॉम 12 दिसंबर, राइट, क्योंकि ये वाला कैंडल है, लेट मी अगेन शो इट टू यू। दिस इज द कैंडल दैट वी आर टॉकिंग, 12 दिसंबर ओपन इज इक्वल टू लो। हम इस कैंडल को पिन करना चाहें, हम क्या करेंगे, इनपुट December 12th 9:15, देख रहे हैं आप यहाँ पर, anchored VWAP visual order bring to front. Now can you see that we have pinned the anchor on 12th of December because as per our understanding, whatever little and technical analysis we did, हमको लग रहा है कि ये एक राउंडिंग बॉटम था जहां से एक ब्रेक आया in the price. Are we clear? We will also let us put volume and see what was the volume. तो वॉल्यूम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग था, which was the initial breakout and then this gave a decisive breakout. Now VWAP की सेटिंग कैसे करते हैं, चलिए VWAP एंकर्ड VWAP की सेटिंग सिंपल है। ये अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा बिकॉज एंकर्ड VWAP का आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल सकता है, यहाँ पर अपस्टॉक्स ने खुद बनाया हुआ है। आप क्या करेंगे, टाइम डेट यहाँ पर आप नोट करेंगे, डेट डालेंगे एंड जो भी टाइम डालना है आपको वो पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होगा, यू विल पिन दैट एंकर्ड VWAP, स्टार्टिंग पॉइंट वहां से होगा एंड नेचुरली वो फिर अपना लाइन खींचेगा। ओके, हम लोगों ने क्या किया, अपर बैंड 1 अपर बैंड 2 लिया। ओके, दीज आर द टू दैट वी हैव सिलेक्टेड, अपर बैंड 1 अपर बैंड 2 लोअर बैंड 1 लोअर बैंड 2, राइट। नाउ नारी को देखने से बहुत क्लियर मालूम पड़ रहा है कि दिस इज अ फेयरली बुलिश स्टॉक, काफी ऊपर जा रहा है एंड ये डेली टाइम फ्रेम पे VWAP देख रहे हैं हम लोग। लेट अस गो टू अ 75 मिनट ऑन आर्ली चार्ट। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, या इवन इफ आई कैन गो टू द 15 मिनट चार्ट, राइट, what evidence can you see, why not at the bottom of this chart? Okay, see, up to you, आप कोई भी पैटर्न का ब्रेक देख रहे हो, राइट, यू आर लुकिंग एट अ breakout area, correct? So this is going to be the breakout area, not this. This is the formation area. The breakout area is going to be here. So you are interested to understand जब ये breakout आया, ठीक है, and when the price started moving up so sharply from this area, if somebody has entered, है ना,
ये ब्रेकआउट पे जो एंट्री किया है किसी ने भी, मोमेंटम चेज जिसने किया है यहाँ पर, उसका TSL क्या हो सकता है या उसका VWAP क्या हो सकता है? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबडी? सो कोई भी ब्रेकआउट को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई अगर मेरा ये VWAP है and this is my current market price, okay, if the price closes below this, my TSL gets hit. Okay, so breakout ट्रेडर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है. Clear? Okay. Now, as we can see here, what has this done? Have we ever traded below the VWAP? This is your anchored VWAP. Okay, this is your -1 standard deviation. This is your -2 standard deviation. This is your +1 standard deviation. This is your +2 standard deviation. So the strength of a stock clearly दिखेगा. अगर वो इस एरिया में ट्रेड कर रहा है तो इट इज बुलिश. अगर वो इस एरिया में ट्रेड कर रहा है इट इज बेरिश. ओके, एंड अगर वो देयर वाज सम इंटरनेट इशू फ्रेंड्स, बोलते ना कुछ इशू हो गया था इंटरनेट से, इंटरनेट का. तो मेरे यहाँ पे इंटरनेट ऑफ हो गया था, तो आई एम ट्राइंग टू रीस्टार्ट द सिस्टम एंड सी इफ वी कैन कंटिन्यू फास्ट. अच्छा खासा एक मोमेंटम चल रहा था. अनफॉर्चुनेटली लेट्स सी. ऑल राइट, आई होप इट इज विजिबल एवरीबडी. यस, हाँ, डन. ओके, सो what we were discussing is, we were discussing three things. Let me for the benefit of everybody who might have missed these points, I'll just note it down again. If market trades
here. Okay, if the market trades in this area, it is bearish. Okay, if the market trades, if the price trades in this area, okay, it is bullish. And if the price trades in this area, which is, between the one standard deviation and one standard deviation plus and minus and the VWAP, it is neutral to sideways. Okay, so very clearly this underlying has been trading and trending upwards. Okay, now what do we see? It is now trading within the two standard deviation and VWAP के बीच में. ठीक है, VWAP is the support for this. तो यहां पर क्योंकि VWAP slope is up, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं एविडेंस थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, विच इज नेचुरल. काफी सारा रनअप आ चुका है, तो अब थोड़ा बहुत फ्लैट होना लाजमी है. So anybody who is trading this, okay, from the breakout stage will be very, very keen about the price of VWAP. As soon as the price starts trading below this VWAP line, that will be his trigger to get out of the trade which he had entered at the start of the break. Breakout कहाँ पे start हुआ था? Breakout start हुआ था यहाँ पर, करेक्ट. तो 261 से वो 322 तक का एक सफर ज्वाइन कर सकता है. ऑलराइट, इज दिस क्लियर? Let us see if there are any other interesting slides that we can cover. So we have understood how we will be setting up the rules. Slope देखेंगे of VWAP. ठीक है, we will notice whether it is trading in the upper bands, lower bands, or within around the VWAP. So if you are a momentum trader, you will look for trades, prices trending above the band for bullish trades, prices below the band for bearish trades, and you will always be aware कि we are tracking a particular price from a particular event standpoint. ठीक है, वो ट्रिगर, वो कैटलिस्ट जो था ना, वो ब्रेकआउट हो सकता है, अर्निंग्स हो सकता है, बजट हो सकता है, इट कुड बी अ पॉजिटिव न्यूज, अ नेगेटिव न्यूज, सम ट्रिगर, राइट, आइदर ऑन द चार्ट, ऑन द प्राइस एक्शन और न्यूज ट्रिगर. तो उस ट्रिगर को आप फॉलो कर रहे हो, करेक्ट. चलो, so we have done this. We are also looking at a few more slides just to understand this concept. Okay, we are looking at the earnings trigger. We will see that there is an entry here. यहाँ पर हम लोगों ने एक देखा कि price is tracking the VWAP and there is a very strong movement above it. So if this kind of a strong movement happens, this is going to be your entry point, because now you are aware कि from that price point, earnings day का जो price point था, जो jump आया था, उसके आसपास प्राइस मंडरा रहा था, अब उसके ऊपर से ट्रेंड करने लगा है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट अर्निंग्स लेड मोमेंटम इज नाउ पिकिंग अप फॉर यू टू एंटर द ट्रेड. ओके, नाउ इफ यू आर लुकिंग एट एन इंट्राडे सेटअप, राइट, काफी सारे हमारे दोस्त इंट्राडे में इसको यूज करना चाहते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, जैसे गैप अप या गैप डाउन होता है, या आप नॉर्मल वीवैप लगाते हो, तो गैप पॉइंट से आप प्राइस डालते. ठीक है, say for example, how does this work? Let me take you back to, let me take a random example. And I'm just taking random examples here and no recommendations or anything of any nature. Is there a gap? No. Okay, so what can we do? Gap में तो बैंकेक्स था. चलो, बैंकेक्स में गैप था यहां से यहां तक. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज सुबह का गैप ट्रैक करेंगे. बैंकेक्स में इसमें ज्यादा
वॉल्यूम नहीं दिख रहा है फ्यूचर्स में, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्रिक बैंक निफ्टी। ठीक है, ये रहा। सो दिस इज बैंक निफ्टी एंड वी कैन सी बैंक निफ्टी में क्या होगा। Right, so there were a few interesting points. This is the initial phase of the market, which we always suggest to ignore for the markets to settle down. But then Bank Nifty started trending lower and it started trading below the bands, correct? And every time it trended 2 standard deviation lower, 2 standard deviation lower, it was a mean reversion trade, right? फिर बाद में क्या हुआ यहाँ पर? Over here, it gave a break, but this break did not last, and it is now becoming within 1 and 2 band. तो यहाँ पर market became sideways. So in this kind of a market, it is going to be difficult to trade given today's movement. Okay, only when there is a because यहाँ पर आप देख रहे हो आपका VWAP का जो slope है, it is flat. So when the slope of VWAP is flat, there are very few trends that are getting formed for that period of observation. So what you will do is, if you're a momentum trader, you will try to avoid those trades. Otherwise, you are risking whipsaws. Let's see some more examples, or if there are any more slides, because it is already 4:40 and I think it is time we will bring it to a close. Right, this is the third scenario which I wanted to show. दैट कई बार क्या होता है कि हम लोग प्राइस देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है एंड वी वांट टू एंटर इनटू द प्राइस इवन आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव इन द प्राइस एंड वी एंटर नियर टू द टॉप। उसके बाद प्राइस जो है काफी सारा हद तक गिर जाता है। सो एज अ ट्रेडर, इफ यू आर लुकिंग एट अ पोजिशनल ट्रेड, यू विल वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक टू द एंकर। ठीक है ना, यू विल वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक टू द एंकर। इन एन अप ट्रेंड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करें एंड वहां से आप वापस पिकअप करें। इट विल गिव यू अ बेटर एंट्री प्राइस एंड यू विल बी ट्रेडिंग अलोंग विद द स्मार्ट मनी। देर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो, मतलब आप दो एंकर्ड वीवैप्स लगा सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी या ऑल टाइम हाई का एक वीवैप और आप बजट का एक वीवैप, ठीक है ना, ये दो वीवैप्स भी आप लगा के देख सकते हो कि भाई क्रॉसओवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को अभी से ये सब चीज देखनी है। वी विल स्टिक टू सिंपल वीवैप्स फॉर द टाइम बीइंग, अंडरस्टैंड देम एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। All right friends, so this is how you would build a system. प्राइस एक्शन आप रीड करोगे, आप मूविंग एवरेजेस के साथ कॉन्फ्लुएंस देख सकते हो, वॉल्यूम प्रोफाइल आप एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल देख ही रहे हो, एंड देन यू आर लुकिंग एट द स्लोप ऑफ द VWAP to understand the directionality of the underlying and then trade in that direction. We have understood that if the market is trading above anchored VWAP and 2 standard deviation, the prices are bullish. If it is below anchor VWAP and between 2 standard deviation minus, it is bearish, and if it is between 1 standard deviation plus and minus and dancing around the VWAP, it is a classic sign of a non-directional setup. I hope you have all enjoyed the session on VWAP. It is time for me to take your leave and wish you all a very good evening, and I will see you in my next session, hopefully which will happen on Tuesday earliest. Till that time, please take care. Tata, bye-bye.